Hello children, I am Poonam Bagga welcoming you in your maths class. We are studying class 8 maths, chapter 8 comparing quantities. In our previous video, we completed the first 6 questions of exercise 8.3 based on compound interest. Today we will be completing this exercise by taking its remaining questions, and with this we will be completing this chapter. So question number 7, here it is. Maria invested rupees 8,000 in a business. She would be paid interest at 5% per annum compounded annually. Find the amount credited against her name at the end of the second year and the interest for the third year. तो यहाँ पर मरिया ने 8,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए एक बिजनेस में और उनको इंटरेस्ट मिलेगा 5% के रेट पर, और कंप्यूटेशन है एनुअल कंप्यूटेशन, यानी every year we will be finding the interest and adding it up into the principal. यहाँ पर हमसे पूछा है अमाउंट क्रेडिटेड अगेंस्ट हर नेम, इसका मतलब उनको कितने रुपए मिलेंगे, क्रेडिटेड मतलब कितने उन्हें मिलेंगे एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. तो टाइम हो गया यहाँ पर 2 years, देखिए आप, और साथ ही साथ हमें पता करना है इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑल्सो. लेट अस बिगिन. फर्स्ट वी राइट वॉट एवर हैज़ बीन गिवन. Solution for this we write the given part, principal. It is rupees 8,000 and the rate of interest, it is 5% per annum. Now the time in this case, it is 2 years. So amount at the end of 2 years. This is the first part of the question. Let us find it as P into 1 plus R upon 100 raised to power n. Now P is 8,000 into 1 plus R, which is 5 here, upon 100 raised to power 2. This will be 8,000 into 100 into 1. It will be 100 plus 5 upon 100 raised to power 2. This can be written as 8,000 into 105 upon 100 whole square. अब ये दोनों numbers 5 से divisible हैं 20 times and 21 times. So this will give us 8,000 into 21 by 20 into 21 by 20. दो बार लिखेंगे हम, power 2 है यहाँ पर. This 0 will be cancelled, this 0 will be cancelled. Then 2 2s are 4 and 4 2s are 8, and this 0 will also come. So here we have 20 into 21 square, it is 441. Multiply करते हैं, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, और साथ में एक 0 आ जाएगा. This is in rupees. So amount at the end of 2 years, it will be rupees 8,820. Also we have been asked to find the interest for the third year, और क्योंकि अभी हमारा केस है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो जो सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट है वही तो बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, और सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट आ रहा है 8,820, और यही बन जाएगा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, रुपीज़ 8,820. और अब हम यहाँ पर पहले इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेते हैं. इंटरेस्ट फॉर the third, let me write it properly, year, this will be equal to principal into rate into time upon 100. हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, principal into rate into 1 year upon 100. यहाँ पर 1 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि थर्ड ईयर की अपने आप में ड्यूरेशन तो 1 year ही है ना. So now let us write principal is now 8820, rate आपका है वही 5%, time is 1 and upon 100. Cancel this 0, it will go 2 times on dividing by 5. Then we have 441, rupees 441. This is the interest for the third year which has been asked. I hope it's clear. Next we take question number 8. Find the amount and the compound interest on rupees 10,000 for 1.5 years at 10% per annum compounded half yearly. तो अब हाफ ईयरली के केस में हम क्या करते हैं, रिकॉल कीजिए, रेट को तो हाफ कर देते हैं और टाइम को डबल, और साथ में हाफ ईयर मेंशन करना नहीं भूलना है हमें. देन
would this interest be more than the interest he would get if it was compounded annually? तो पहले तो हम हाफ ईयरली कैलकुलेशन करेंगे, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये टाइम हो गया और ये है रेट, और फिर हम कंपेयर करेंगे कि अगर यही कैलकुलेशन एनुअल कैलकुलेशन हो तब ऐसे केस में ये इंटरेस्ट कम होगा या ज़्यादा, हमें ये पता करना है. ठीक है, सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. P is equal to rupees 10,000. Then the rate and time for half yearly computation, let us write it here. If the interest is computed half yearly, तो ऐसे केस में रेट आपका हो जाएगा हाफ. कितना है अभी? 10%. 10% पर एनम. तो ऐसे केस में ये हो जाएगा हाफ. 5% पर हाफ ईयर. और टाइम आपका हो जाएगा डबल. अभी है आपका टाइम 1.5 years. दिस इज नथिंग बट 3/2 years. आप देखिए 2 1s are 2 + 1 3/2, और अब इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5 years. Now here what we have to find? Look at the question. Find the amount and the compound interest. So here we have to find the amount also and the compound interest also. Both we have to find. So the amount is given as P into 1 plus R upon 100 raised to power n. The principal is 10,000 rupees. 1 plus rate, this time it will be 5 upon 100, and now the time will be 3.5 years. This will be 10,000. Here we will have 105 upon 100 raised to power 3. 5 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 20 times और ये 21 times. This will be 10,000 into 21/20 into 21/20 into 21/20. ये तीनों ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो गए. ये हो गया 2 5s are 10. Next what we have? 5 and then 21 whole cube. Here we have in the denominator as 4. 2 2s are 4. Now 21 cube, if you find it, you will get it as 9,261 and upon 4. Multiply by 5. 5 1s are 5. 5 6s are 30. 3 carried. 5 2s are 10 and 3 13. 1 carried. 45 and 1 46, and here upon 4. Let us divide by 4 and get the answer. This will be 4 1s are 4. 4 1s are 4. 23 5 times. 3 0 7 times. 25 6 times 24. 1 0. 2s are 8 and 5 times. This will be the amount with half yearly computation. ठीक है? Now we find the compound interest also. This will be amount minus the principal, rupees 11576.25 minus rupees 10,000. और आप माइनस करेंगे तो आपको easily आंसर मिल जाएगा. This will be equal to rupees, just subtract 11576.25 और 10,000 को हम यहाँ लिखेंगे 0.00 करके. ठीक है, we will get 1576. This is the compound interest in case of half yearly calculation. Next we find the interest if it is compounded annually. तो हमारा प्रिंसिपल तो वही है रुपीस 10,000. रेट हमारा है कितना 10% पर एनम, और टाइम हमारा कितना है. Let us go back and just have a look at the question. Time is 1.5 years. Okay. We write here 1.5 years. So the amount, it is given as P into 1 plus R upon 100 raised to power n. 10,000 into 1 plus 10 upon 100 raised to power 1.5. This will be 10,000. जब भी ईयरली कैलकुलेशन होगा या एनुअल कैलकुलेशन होगा तो हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही रहने देंगे, सिंप्लीफाई नहीं करेंगे. हम सिंप्लीफाई कब करेंगे? जब हाफ ईयरली कैलकुलेशन हो,
तब हम 3/2 ईयर्स कर लेते हैं और फिर टाइम को डबल करना होता है तो 2 से 2 कैंसिल होके हमें 3.5 ईयर्स मिल जाते हैं। और जब भी हमारा एनुअल कैलकुलेशन है तो हम इसे फ्रैक्शन में ही रहने देंगे और इस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 + 10/100 पावर 1 को सेपरेट कर देंगे और 1 + 10/100 पावर हाफ को सेपरेट कर देंगे। दिस विल बी 10,000 एंड हियर वी विल हैव 110/100 पावर 1 है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आएगा। यहाँ पर ये जो हाफ है ये रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 100 और पावर अंदर चली गई तो बाहर लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 5s are 10. This will give us 10,000 into, cancel this 0, 11/10 into, here we will have 105/100. These two zeros will be cancelled, 1 will be cancelled. Here we have 110 into 105. Now multiply 105 into 11. It will be 105 into 105, 55 and here 11. So it will be 11,550 rupees. ठीक है, और हमसे क्या पूछा है? इंटरेस्ट भी तो पूछा है. So we find the interest. Compound interest. It is amount minus the principal. So rupees 11,550 minus rupees 10,000 which is the principal. This will give us rupees 1550. तो ये हो गया एनुअल कंप्यूटेशन के केस में इंटरेस्ट और ये हो गया हाफ ईयरली कैलकुलेशन. अब हमसे इनका डिफरेंस भी पूछा है. फर्स्ट वी राइट इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली. इट इज रुपीज, लेट मी गो बैक, 1576.25. 1576.25. And interest when compounded annually, it is rupees 1550. अब हमसे पूछा है कि क्या ये इंटरेस्ट ज़्यादा है एनुअल कैलकुलेशन से, तो आप देख सकते हैं ऑब्वियसली इट इज़ ग्रेटर देन दिस नंबर एंड सो वी कैन राइट दैट येस द इंटरेस्ट व्हेन कंपाउंडेड हाफ ईयरली इज मोर देन दैट व्हेन कंपाउंडेड एनुअली. और यही हमसे पूछा था. ओके, वी टेक द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 9. Find the amount which Ram will get on rupees 4,096 if he gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly. तो यहाँ पर हमें दिया है कि राम जो है 4,096 रुपीज़ जो प्रिंसिपल है उस पर 18 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं 12.5% पर एनम पर. तो उन्हें अब कितना अमाउंट मिलेगा और इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है हाफ ईयरली. तो प्रिंसिपल आपको दिया है रुपीज़ 4,096. रेट है आपका कितना, देखिए 12.5% पर एनम. इसका मतलब 25/2% पर एनम. और हाफ ईयरली के केस में रेट को हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे पर हाफ ईयर एंड दिस विल बी इक्वल टू 25/4% पर हाफ ईयर. टाइम आपका हो जाएगा डबल. अभी कितना है देखिए 18 मंथ्स. पहले इसको हम ईयर्स में कन्वर्ट करेंगे 12 से डिवाइड करके और फिर इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स और ये कट जाएगा 3 टाइम्स. सो दिस विल बी 3 हाफ ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द अमाउंट. तो लेट अस टेक द न्यू पेज. Amount is given as P into 1 plus R upon 100 raised to power n. The principal is 4,096. 1 plus rate will be 25/4 into 100 and the time now is 3. इसको simplify करते हैं, ये 1 times और ये 4 times cancel हो जाएगा 25 से. 4,096
इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 16 हो जाएगा ये होल क्यूब. दिस विल बी 4096 और ये 16 1 जा 16 प्लस 1 17/16 हो जाएगा और 3 टाइम्स हो जाएगा. नाउ वी विल डिवाइड बाय say 8. 8 2s are here, 8 5s are 40, 8 1s are 8 and then 2 times 16. Then let us divide by 2. 2 2s are 4, 5s are 10, 6s are 12. Yes, 256 is 16 square and 16 square here we are getting, we can cancel these two numbers. 17 cube is the answer and if you solve it you will get it as 4913 rupees. So this is the amount which Ram will get in this case. Next we have question number 10. The population of a place increased to 54,000 in 2003 at a rate of 5% per annum. Find the population in 2001. What would be its population in 2005? ये एक एप्लीकेशन है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले का. कैसे आप देखिए कि स्टार्टिंग में कुछ पॉपुलेशन रही होगी प्लेस की, फिर 5% इंक्रीज के साथ नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़ गई, फिर 5% इंक्रीज हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ईयर कुछ बढ़ गई और फिर फाइनल जो पॉपुलेशन हुई वो एक तरह से अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में रिप्रेजेंट करते हैं. सो हियर वी हैव बीन आस्क्ड द पॉपुलेशन इन 2001. जब हम फॉर्मूला लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेज टू पावर n, तो ये तो पॉपुलेशन होगी प्रीवियस ईयर्स की और ये पॉपुलेशन होगी बाद वाले ईयर्स की. ये तो होगी ओरिजिनल वैल्यू, ध्यान रखिएगा ये, क्योंकि इसी की वजह से हम सॉल्व कर पाएंगे. और ये हमेशा होगी फाइनल वैल्यू, बाद वाली वैल्यू. इसको अगर हम समझ लें तो हम इजीली ये क्वेश्चंस कर सकते हैं. अब इस फर्स्ट केस में देखिए 2001 की पॉपुलेशन पूछी है और 3 की दी हुई है, 2003 की. इसका मतलब हमें फाइनल वैल्यू 2003 की पॉपुलेशन तो दी है और ये 2001 की पहले वाली वैल्यू पूछी है. तो इस केस में हमसे ये P पूछा है और A दिया हुआ है इस फर्स्ट केस में. इसको कनेक्ट कीजिए आप. लेट अस नाउ राइट द सॉल्यूशन. हियर गिवन पॉपुलेशन इन 2003 इट इज 54,000 and the rate of increase it is given as 5% per annum. Population in 2001, this will be given by this formula. Population in 2003 ये होगी equal to population in 2001 into 1 plus rate upon 100 raised to power n. और टाइम कितना हो जाएगा अब आप देखिए, टाइम हो जाएगा आपका 2003 minus 2001 that is 2 years हो जाएगा टाइम. अब इसमें रखते हैं हम, ये तो दिया हुआ है 54,000. दिस इज इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001 जो हमसे पूछा है 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2 हो जाएगा. ठीक है, दिस विल बी 54,000 इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001. आई एम राइटिंग इट इन दिस वे. ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 होल स्क्वायर. 5 से डिवाइड करते हैं, 21/20 हो गया. ये मिल जाएगा पॉपुलेशन इन 2001 इंटू 21/20 इंटू 21/20 एंड हियर वी हैव 54,000. यहाँ से ये दोनों जो नंबर्स हैं इनको हम LHS में ले आएंगे और 2001 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करेंगे. कैसे लाएंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं. यहाँ है 54,000, जो डिवीजन में है वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन में आ जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू पॉपुलेशन इन 2001. नाउ कैन वी डिवाइड? यस, इफ वी डिवाइड बाय 3, 3 7s are here, 3 1s are 3, 3 8s are 24 and 000. Then we cannot divide. I think we can divide by 3. 7s are 6 times 18 and 1000. This will be 6 4s are 24 and 1 2 3 4 5 upon 49. This is the population in 2001. And now if you divide this number, it's a big number, you will get it as 48979.59.
and this is the population in 2001, and let us now write an approximate value. This will be 48980 approximately. Okay. Next we also have to find the population in the year 2005, and we know that the population in the year 2003, it is given as 54,000. Also the rate of increase in population, it is given as 5% per annum for the full year. And now the time, we denote it by the letter small n. This will be how much? We are comparing the population in the year 2003 and 2005. 2003 में जो population है उसी के basis पे तो हम 2005 की population निकालेंगे. So the time will be 2005 minus 2003, and this will be equal to 2 years. Now what will be the relation between these two populations? Obviously when we use the formula of compound interest, we get amount equal to principal into 1 plus r by 100 raised to power n. Amount is always the final value and the principal is always the starting value, and similarly we can write here the population in the final year or the final value, it will be equal to the starting population, which will be the population in the year 2003 in this case, or we can say the initial value, जो value से हम start कर रहे हैं, और इस case में हम 2003 की population से counting start करते हुए 2005 तक पहुंच रहे हैं. तो जो हमारी initial value हो जाएगी, let us first write the formula first, 1 plus r by 100 raised to power n. Now what will be the initial value? वो population जो starting में होगी, और obviously 2003 की population starting में होगी, so we can write here population in the year 2003. And now what will be this final value? The population which we will be getting afterwards, that is population in the year 2005. तो इस तरह से ये दोनों populations connected हैं इस formula से. Let us now write it fairly. We can write it as population in the year 2005 equal to population in the year 2003 into 1 plus r upon 100 raised to power n. Now this is 54,000, 1 plus 5 upon 100 raised to power 2. Again this will be 54,000 into, this will be 100 into 100 plus 5, 105 upon 100 raised to power 2. Now these two numbers, they are getting cancelled by 5, and so we can divide by 5 20 times and here 21 times. We will get it as 54,000 into 21 upon 20 into 21 upon 20. Since the power is 2, तो हम दो बार इसको लिख सकते हैं. Cancel this 0, cancel this 0. We can divide by 2 one time. Here 2 2s are 4, 7s are 14 and 0. Again on dividing by 2, here we have 1 and here we will have 1, then 3 and 5, 135. This will give us 135 into 21 into 21. 21 square is 441. So we need to multiply 441 and 135. Let us multiply. It will be 5 here, then 20, then here we will be having 22. Then by 3, 3 4s are 12 and 1, here we will have 13, and then by 1, 441. 5, 3, here we have 5, this is 9 and 5. So it is equal to 59,535. This is the population in the year 2005. So always remember, whenever we will be having such cases, we will be taking the starting value to this right side along with this rate expression, and we will be taking the value that will be coming afterwards in the LHS. जो वैल्यू स्टार्टिंग में है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो तो आएगी RHS में इस रेट और टाइम के एक्सप्रेशन के साथ, और जो वैल्यू हमें बाद में मिलने वाली है उसे हम लेंगे LHS में. इसको ध्यान रखिएगा, तभी आप ये क्वेश्चन सही कर सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. In a laboratory, the count of bacteria in a certain experiment was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. So what do we see here?
This is the case of growth of bacteria, and in such questions also we will be applying the formula for compound interest. और कैसे देखिए आप, 5,06,000 ये है स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ द बैक्टीरिया, स्टार्टिंग काउंट, और इसको हम प्रिंसिपल की जगह लेंगे उस फॉर्मूले में. वी विल बी राइटिंग इट जस्ट नाउ. दिस इज द टाइम 2 hours and this is the rate of increase 2.5% per hour. Let us now write it. Initial count of bacteria, it is 5,06,000. Also the rate of growth, it has been given as 2.5% per hour, and the time here it is 2 hours. Now we have been asked to find the count of bacteria after 2 hours. So we can write count of bacteria after 2 hours. It will be equal to, first we will take the starting value, or we can say the initial value. Then the expression of rate and time, 1 plus r upon 100 raised to power n. तो पहले हम लेंगे स्टार्टिंग वैल्यू, इनिशियल वैल्यू मतलब जो स्टार्टिंग में है, जिससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेज टू पावर n. तो स्टार्टिंग काउंटिंग क्या थी बैक्टीरिया की, इट इज़ 5,06,000 इंटू 1 प्लस 2.5 अपॉन 100 रेज टू पावर 2. अब यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना होगा. इस डेसिमल को हटाकर हम नीचे एक ज़ीरो लगा सकते हैं. पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो नीचे एक ज़ीरो लग जाएगा. और अब 25 और 1000 दोनों ही 25 से डिविजिबल हैं. हम 25 से डिवाइड करते हैं. इट विल गो 1 टाइम, 25 4 100 और एक ज़ीरो मिलेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू 5,06,000 इंटू 40 इंटू 1 विल बी 40 प्लस 1 अपॉन 40 and power will be 2. This will further be equal to 5,06,000 into 41 upon 40 into 41 upon 40. पावर 2 है तो हम 2 बार इसको लिख रहे हैं. नेक्स्ट व्हाट, कैंसल दिस ज़ीरो, ये ज़ीरो कट गए, ये ज़ीरो भी कट गए. वी कैन डिवाइड बाय 4, 4 1s are 4. On dividing this we will get 4 1s are 4, then 10, 2 times 8 26, 6 times 24, 2 will be left, 20, 5 times 20. So we have here 1265 into 41 square. It is 1681 upon 4. Now we need to multiply these two big numbers. You can do it in your copy. It will come out equal to 2126465 upon 4. 21,26,465 upon 4. Let us now divide it. 4 5s are 20, 1 will be left. Here we will have 3 times, then 1 time 24, it will go 6 times, then again 1 time, 6 times 24, then 0.25. On dividing we will get this answer. This is the count of bacteria after 2 hours. And now we can write the estimated value or approximate value. This is the value approximately. How we have written this? After the decimal we have the digit 2 और 5 से छोटी डिजिट होती है तो हम उसे ऐसे ही रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर +1 करने की ज़रूरत नहीं है. So this will be the approximate value, the approximate count of bacteria after 2 hours. Okay, we have one more question. Question 12. A scooter was bought at rupees 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. Now here one scooter is there and its value in the beginning is 42,000. तो जो स्टार्टिंग वैल्यू है याद रखिएगा वो जाएगी रेट और टाइम के एक्सप्रेशन के साथ. और फिर हमें दिया है कि इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है, कम हो रही है. तो इन सच केसेस ऑल्सो वी कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट. उसी का ये एक एप्लीकेशन है. और इस बार क्योंकि कम हो रही है तो रेट हम करेंगे माइनस. इस बार हम प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे क्योंकि वैल्यू डेप्रीशिएट हो रही है. और रेट है आपका 8% और वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है आफ्टर 1 ईयर. सो लेट अस बिगिन. Cost price of scooter, it is rupees 42,000 as given in the question.
Rate of depreciation, it is 8% per annum for the full year. Then the time, it is 1 year. Okay, now we need to find the value of the scooter after 1 year. So we can write here value of scooter after 1 year, it will be equal to, which value we will take first? Obviously value of scooter after 1 year, ये तो आने वाली है बाद में value. अभी present value क्या है वो हम यहाँ लेंगे, present value or the starting value or the initial value into 1, and this time we will be placing a minus in between, 1 minus r upon 100 raised to power n. और इस बार माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, कम हो रही है. इंक्रीज हो रही होती तो हम यहाँ पे प्लस लिखते, और अगर डिक्रीज होती है तब हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस. नाउ सिंपली प्लेस दीज वैल्यूज. प्रेजेंट वैल्यू इट इज 42,000 into 1 minus r, it is 8 upon 100 raised to power 1, क्योंकि टाइम है 1 year. Next what? This will be equal to 42,000 into 100, 1s are 100, let me write here, minus 8 upon 100 raised to power 1. This will be equal to 42,000 into 100 minus 8, it is 92 upon 100. Cancel these two zeros. Now multiply 92 and 42. 2 2s are 4, here 18, 4 2s are 8, here 36, 4, 16, here we will have 8 and 3. So it is equal to 38,640 in rupees. This is the zero that we have written in the end. So this is the price or the value of the scooter after 1 year, और जो कि वो कम हो गई है. So this was exercise 8.3, and with this we complete this chapter of comparing quantities. I hope everything is clear. Practice these questions and we will meet soon with the new chapter. Goodbye.